Okay, good morning everyone. So we will continue our discussion. We were talking about HTML and we have talked about the HTML essentials. In the sense we have talked about the basic tags already. ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଛେ ଏବେ ଯାଏ. So we have talked about the paragraphs, headings, lists, anchor, image and comments. I have also revised in the previous class, and then as you can see over here we also did some exercises the for whatever I have already covered. And last class outer line outlook level elements, and we spent some time talking about the different tags over here. Okay, so we talked about the span tag, the div tag, and some more elements over here. Okay, so this is what we have done in the last class, as you can see over here. So today, before we go forward, okay, so this also we talked about the HTML entities. Okay, and a duita exercises, I think good exercise on the snowman production को we produced over here. So today my task will be to talk about something called semantic markup. So semantic ortho कौन? So we are actually जब भी हमें markup add करते, markup कौन? जो भी हमारा HTML tags, whatever HTML tags or elements we add, okay, it must add to the meaning of the content. Content हमें जहाँ भी लिखो जो, suppose हमें, if you remember हमें भुवनेश्वर से विकिपीडिया पेज को रिक्रिएट करते लो, तो सेथरे भी जहाँ भी हमें टैग ऐड करते, कोटा हेडिंग होगा, कोटा पैराग्राफ होगा, whatever we are adding, it should have some meaning. So इथरे जो मुझे लिखी चीज़ semantic markup means the markup or HTML tag or elements whatever I add to my page, it should have some sort of meaning attached to it. Okay, so a question पचारी परिबा, what purpose or role does the HTML element have here? तो मैं पचारीबा is if मु a particular page रे मु HTML tag add करेगी, तार कौन meaning रहेगा, तार कौन purpose रहेगा, है ना? आउ जब भी हमें HTML tag add करो, so ये तीनटा reason you should have. So first the HTML tag जोटा भी तुम add करो, it should make the code more understandable. Right? कि H1 हो कि paragraph हो, जहाँ भी तुम add करो, सेटा देखी कि जे भी तुम्हारा code देखो should be able to understand कहीं की सेटा add है चीज़ सेटा, है ना? कहीं की सेटा paragraph की, कहीं की सेटा heading 1 के heading 2 से easily देखी कि जाने पारते हुआ दरकार. Next, what you can see is it will make it more accessible. So basically, whenever you design a page, okay, page is not only meant for a desktop. Web page is not only meant for a desktop. You are also creating for a mobile, okay, maybe for a tablet. जो भी बहुत बड़ा devices आजकल व्यवहार हुए, so you never know कि कोटा के को screen रे देखो जी. So it is very much possible that someone would have HD screen रे भी देखो तो. So in that particular case, you should be able to create a page that should be available in all formats. है ना? अब एमती भी है पारे कि there are people who hear it, you know, जो मने either visually impaired, है ना? Visually impaired होता है ना? We don't use the term blind or something, हमें तो visually impaired वाली पोजीशन में देखी पारंत नहीं, but सेमाने भी तमो पेज को सेमती experience करी पारिबे. आजिकल तमो जो भी ब्राउजर आसुची, ब्राउजर रे गोटे फंक्शन आसे read aloud, है ना? मु जानी तो तमे देखी चना नहीं, but एटा तमे देखी पारिबो is जो भी ब्राउजर आजकल आसुची सेतरे ई फंक्शन आसुची read aloud. Even PDF reader मान कर भी ये read aloud function आसे. So the purpose is कि तमे ये read aloud function टा ऑन करले से कौन करेगा, तम स्क्रीन पे जहाँ भी देखा जाउची सेटा से पढ़ी पारिबो. So if तमो HTML जो तुम्हारा कंटेंट है ताको तुम ठीक HTML देथिबो,
that will also become accessible है access माने तो पहुंच पारुथबो सेतरे आ गोटे टर्म एटे देखि पारुथबो is SEO. SEO stands for search engine optimization है तमे जते optimization SEO. So basically तमे यह कहूचो कि if your page is well designed, so जो भी सर्च इंजन हो अगर गूगल हो कि याहू हो कि बिंग हो जो भी सर्च इंजन अच्छे से माने इजीली तुम पेज को ठीक रे इंडेक्स कर परिबे समय जानि परिबे तुम पेज काहे कि यू हैव क्रिएटेड ओवर हियर. Now what the reason is for quick editing of code. If someone is able to understand your code, they can also edit your code. Okay, so they can also quickly edit your code over here. So मैं दुईटा example देखी बैठे of a very good and a well designed website. प्रथम is something called Medium. Medium got a particular website which lot of people use to write blogs. Samane blogs में सेटा use करंती. एटा गोटे this is the Medium page हम देखे पारतो. So बहुत गुडे articles, बहुत type रो articles सेटी आसे not only for programming about data science, machine learning बहुत गुडे जिनसे आसे. Suppose हमें health विषय किसी देखी परिवा. So this is a well designed website. प्रति particular जहाँ इटे तुम स्क्रीन तो देखो जो तार गोटे particular निर्दिष्ट purpose अच्छी कहीं की इटे आसला कि कहीं की tag use होला. So everything is has been given a particular purpose over here. है ना? अब if तमे तारो page source को जिबा है ना? Page source एठी तमार body देखा जाउछि देखि बाटी. Okay, so this is the body tag over here. देखियो एठी body open body close. Okay, तो बढ़िया देखा जाउनी. अच्छा, let us do one thing. Use the toolbar or let us go to a particular article. What a particular article को जिबा. ଆଉ ତାର ଆମେ ଦେଖିବା तार सपोज एटा गोटे कोन गोटे देछि ठीक अछि तार हम देखिबा इंस्पेक्ट ठीक सो इंस्पेक्ट क्लिक करले हमको ये हमर डेवलपर टूल बार हमको दिया जो थरे के तमे देखि पारथो सो ए केस रे तमे देखो यू हैव एचटीएमएल बॉडी डिव हां सो प्रति हमर जो एटा होछि हमर कोन हेडर हैला हेडर गोटे डिव टैग रे अछि हां it body it entire blue color hela mane eta pura body ta okay this is again something maybe about the heading hela eti image asla okay so you have different paragraphs eta got div so basically this page consists of lot of divs hela bahut bada div tag use karai cha hame jani chu last time hame padhu che what does a div do hela div tag हमें देखिले it is for content division or basically to decide that one piece of just to create show that this belongs to a particular content out there so हमारा भुवनेश्वर वाला page रे we have created this divs okay we divided the page into various div tags over here so तुम देखि पारथबो कि हमें बहुत बड़ा divisions रे ताको हमें okay so we have created into various different parts over here so etymology history tak hum alga alga parts pe divide karchu using the div tag over here anyways so that is one example hame dekho of a website that uses div tags ठीक है so ଆଉ ଗୋଟେ example ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା is of payment website ହେଲା ତମେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା UPI ଆସିଗଲାଣି फोन पे हो कि गूगल पे stripe ଆଉ ଗୋଟେ payment ଏମିତି website ଯୋଉମାନେ ଏମିତି payment ଦିଅନ୍ତି razor pay हो कि बहुत गुड़ा एमती website आसे ସେମାନେ online payment allow କରନ୍ତି
a particular website I think is better than the previous one. देखिପାରିବା ଏଠି ଏଠି ଦେଖ this is what all can we see. Okay, so ଏଇଟା ତମେ ଦେଖ, it is this is a div tag, but then ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ this is a header. Okay, and then ଆଉ କଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ is this is ଏଇଟା site navigation ବୋଲି button ବନା ଯାଇଛି, and then you have the a top portion ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, it's canvas ହେଲା ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା canvas କଣ ହେଲା, ତାପରେ again ଏଇଟା ଗୋଟେ canvas ହେଲା. So basically what I can say is get କେତେଟା HTML5 elements use କରୁଛୁ, flex grid use କରୁଛୁ. So basically the difference between both the website, ଏଇଟା ଗୋଟେ stripe ର website ତମକୁ ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ଏଇଟା medium website ମୁଁ ଦେଖେଇଲି over here. So the purpose is that a medium website is using some of the old HTML tags. So केतरा HTML older HTML tags use करछे, where a strip is using some of the newer features. But the purpose over here is जोटा भी हमें करू in case of medium हम देखिले बहुत गुड़ा हमें એટલે div tags use होता है, div tags use होता है. ଆଉ ଏଇ stripe ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ कि just not any divs but बहुत गुड़ा अलगा अलगा header footer एंती बहुत गुड़ा एंती semantic markup एठी use होचे. So what we will do today is we will learn about some HTML5 ହେଲା, HTML5 tag विषय में कथा हबा. So we do not want only div tags. We do not want only div tags instead of divs. माने एई जेमती हमें पेज देखिले हम एई पेज रे सब गुड़ा div थला. So body तळे एटा गोटे div. Okay, so multiple divs you can say. एटा गोटे div, एटा गोटे div होला, एटा गोटे div, एटा गोटे div हैना. So हमें बहुत गुड़ा एटा div tags यूज करते. But in case what I want to do is instead of using so many div tags, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମେ କେତେଟା ନୂଆ HTML5 elements ଦେଖିବା. ଆଉ ଏଇ ଗୁଡ଼ା elements are all semantic markup ହେଲା, semantic. ଆର semantics ଅଛି, ମାନେ ତାର କିଛି meaning ଅଛି why ଏଇ particular ଆମେ use କରୁ. So just from the name itself you can try to put ମାନେ just know about it. ଏଠି ଦେଖୁଛୁ there is a section article 3 ଅଛି, ଏଟା nav ମାନେ navigation ହେଲା, navigation माने travel. Okay, so basically good website भितरे how do you go from home search की जहाँ पे सारा navigation आसे. तापरे there is something called main, तापरे आसला header footer आओ finally aside. HTML5 actually बहुत गुड़ा हमते नोआ tags use होची, but हमें केतरा tags देखिवा that is meant to replace the div tag. हमें चाहूँ खाली div tag use करियो अपन, but we want to go for some new specific elements है. So प्रथम हम देखिवा section now article. So instead of using the HTML5 div tag, हमें either you can go for the section or you can go for the article over here. So by clicking on this, I will take you to the MDN documentation. MDN रे टिके देखिवा ए section काम को. What does this section actually stand for? ठीक है जी. So section over here you can see the generic section element. All right. So what does this do? This represents a generic standalone section of the document. Okay, and it does not have more specific semantic element to represent it. So in case रे तुम देखे पार्छो एटा गोटा आर्टिकल एटे अछि choosing an apple. आउ choosing an apple भितरे तमरो केतरा सेक्शन अछि. So एटा गोटे introduction section, एटा गोटे criteria section. So समथि दिया है. So basically change करूँ एटा, but then this is just instead of using a div tag तमे ताको section बोली को. तो section अर्थ गोटे हुआ, right? गोटे पेज रे गोटे पैराग्राफ हम गोटे चैप्टर दिया है. चैप्टर रे बहुत गुडे सेक्शन था हैला, कि तमे कहि परिबो गोटे आर्टिकल तुमको दिया है, गोटे डॉक्यूमेंट तुमको दिया है, ता भीतर केतरा सेक्शन अछि. हम समति ताको से अर्थ रे बुझुछ.
सो यही केस रे भी आमे टिके चेंजेस करबा आमे केतरा सेक्शन बनवा ना देखिबा एठी मु इनिशियली आई विल चेंज एवरीथिंग टू सेक्शन तापर धीरे धीरे जब आमे सिखिबा एटा आई विल ऐड मोर स्टफ ओवर हियर ठीक अछि देखिबा हमर बहुत गुडा एंटी डिव टैग्स अछि सो आई विल बिगिन फ्रॉम द टॉप वन एठी आपको मते सेक्शन बनेबी हला सिमिलरली जोठी मु सेक्शन ऐड करूचे ओके सेट सेक्शन एथरे भी आई एम गोइंग टू ऐड सेक्शन ओके सो ये सेक्शन एठी आरंभ होला एठी एंड होला ए सेक्शन राइट section okay and this we have also I'll put it in a section okay आपको भी हमें section require so I just want to tell कि even though we are adding this section so एटा भी block level element so हमको basic difference जाना पड़ेगा नहीं section open section close finally geography yeah, we go for section right section close and finally it got a last section number and we go for section okay section close okay so if we visualize this if taku ama dekhiba kemti dekha jauchi let's check it out Bhubaneswar all right ये देखि पारुछो not much of a change है ना so हमें जहाँ last time बने थे लो सेमती ही सब अच्छी but instead of div tags हमें ताको अलग अलग section रे भी देच है ना so starting from this place we suppose we go for inspect तुम देखि पारिबो is we have different sections it got a section it got a section it got a section so a lot of different sections are there okay you can see each of them are different sections over here ठीक है जी so section विषय हम कौन बुझले it is a standalone section of the document so a particular portion of the document over here है so एक आउट के भी तुम पढ़ी परिबो ए विषय रे ए स्लाइड मु जब पठाइबे तुम आउट के भी पढ़ी परिबो सेक्शन काहे की यूज हो तो हमें जस्ट मन रखबा सेक्शन इज टू डिवाइड our single document into different parts over here. Instead of div tags, हम इटा सब नुआ elements से कुछ. So first हमें देखिले इटे section, तापर हमें देखिबा article. Okay, हमें देखिबा इटे article. Now article भी it is a self-contained composition, है ना? In the sense इटे कुछ example बहुत बढ़िया example देइछि article ता भितरे आउ भी आर्टिकल एटा तमे आजिकल वेबसाइट रे देखो तो एमती वेदर फोरकास्ट थाए इवन तुम मोबाइल फोन्स रे भी तुमको गोटे वेदर फोरकास्ट दिए आज एमती रेन रो प्रोबेबिलिटी कि काली रो रेन रो प्रोबेबिलिटी एमती सेक्शन है कि आर्टिकल है कि देता सो यू कैन हैव डिफरेंट आर्टिकल्स ताको भी हमें पढ़ि परिबे सो गिवन डॉक्यूमेंट कैन हैव मल्टीपल आर्टिकल्स आल्सो हैला एंड एठी गोटे बढ़िया एग्जांपल देचे सो ईच पोस्ट would be contained in article element possibly within more sections so तमे कोन कर परिबो इस सेक्शन और आर्टिकल को इंटरचेंज कर परिबो तुम कहि परिबो गोटे आर्टिकल भीतर बहुत बड़ा सेक्शंस अछि कि गोटे सेक्शन रे बहुत बड़ा एंटी आर्टिकल अछि so again आरो it will depend upon the semantic meaning तमे गोटे ब्लॉग लिखुछ सपोज ब्लॉग रे बहुत बड़ा तमे आर्टिकल लिखुछ है ना तमरो निजर ब्लॉग मे बी सपोज यू आर राइटिंग लॉट ऑफ डिफरेंट articles so एमती कहि परिबो कि इस गोटे सेक्शन रे बहुत बड़ा आर्टिकल्स अछि कि गोटे आर्टिकल रे बहुत बड़ा सेक्शंस अछि सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन तो मैं एमती क्रिएट करि परिबो सो मु एठी गोटे जिंस करबी इज एथरे तो हमर सेक्शन हम ऑलरेडी कर दै छै so I'll just create some articles within that suppose हम जिबा एठी okay so empty nahi ki you are bound to create so suppose in three case instead of paragraph I'm going to use article है एंटी गोटे आर्टिकल हम क्रिएट करबा this is an article okay एटा भी गोटे आर्टिकल करि ठीक अछि just to show you okay
article. It a gote mo example nabi. This is for history. History gote section bhitre duita articles achi. Okay, so let us go to the Bhubaneswar page, refresh, and ethi dekhiba ame history रे देखि पारछो एटा गोटे आर्टिकल एटा आ गोटे आर्टिकल over here. So ए जो div tag हम initially use करथिलो, instead of using the div tag, now we have gone for two different articles over here. एटा गोटे article and this is another article over here. ହେଲା, two articles we have proposed in this particular section over here. ठीक है. So these are two tags that we have learned, section kimba article तुम use करि परिबो. Again the purpose over here is to do content division. ହେଲା, जो भी तुमर content अछि ताको divide करिवा पय you can use this section or article over here. Next हमें एठी देखिबा is something called nav. Okay, nav जेमती तुम 3 letter word अच्छे बट एटी तुम बुझी पारथबो nav माने navigation है. Navigation in the sense गोटे वेबसाइट or different sections को जीवा पई we use a navigation element over here है. So the nav HTML element represents a section of the page whose purpose is to provide navigation links है. So गोटे पेज रे बहुत प्रकार navigation थाई पर ए पेज जो तुम देखो छो MDN रो पेज एंड बहुत बड़ा navigation अच्छे. सपोज एटा तुम देखि पारछो मु एथरे आइदर टेक्नोलॉजी रे जेबी कि रेफरेंसेस एंड गाइड्स की फीडबैक एटा गोटे navigation होय परिबो. एटा भी गोटे navigation आपको गोटे टर्म यूज करा जाय ब्रेड क्रम्ब बोली कहवा जाय. ब्रेड क्रम्ब ब्रेड रो बहुत छोटे छोटे गुंडा छोटा पड़े. सो यू नो सो वी आल्सो कॉल इट एज अ ब्रेड क्रम्ब. ए साइड बार रो भी तुम देखि पारछो हमतिली. सो दिस आल्सो कैन बी अ navigation. So the purpose of this navigation is just to provide navigation links. So we put that inside the nav. We put that inside the nav box over here. So amo case re navigation time we are having this. So instead of section ame taku na de deba as nav. Apo section na karbi ame apo pariba as nav. So nav आपको instead of OL हम यूज कर दबा UL over here है. देखिबा केमती देखा जाउ छै एटा ए केस रे. Refresh and this is the nav. So basically change है नहीं. You can see that let's see, go to nav over here. No, navigation. So तुम एटा ए कोड मोर देखि कि तुम कहि परिबो that nav भितर एटा अछि माने एटा links अछि आ भितर. This contains some links that can be used to browse this page, okay, or this website. तुम कहि परिबो nav भितर एटा अछि so that I can move around in this particular page over here. So that is the purpose of nav. So nav रो अर्थ कोन navigation, right, to move around. Main. Okay, we have something called the main tag over here. A good thing is we are using all this instead of div tag. So initially last class report div create instead of doing that we are going to use the a section article nav main. Okay. So main amar kon achi. So main represents the dominant content of the body document. So amar main amar HTML भितर we have head and body. Head जोटा amar header information रखता है, body जहाँ भितर amar जहाँ display होगा सेटा था. So body भितर जो portion टा amar major content अच्छे ताको हमें main भितर पड़ो. Okay. So the main HTML element represents the dominant content of the body of the document. So suppose एथिरे हमको गोटे देखा जाउची article header हम पढ़े देखिबो but main. So basically इस छोटा पेज रे एटा हमर main section था where people are going to read about it. So सतला के तक हमें main बोली कहउछो. So हम भुवनेश्वर वाला पेज रे हमें कहि परिबा आपको देई परिबा as section एटा section था
आपको गोटे हम पुट कर एस मेन है एटा हूँ आम मेन कंटेंट है सो यही सेक्शन रू मुझे जी कौ जाए नेबी नहीं जाए नेबी है कट करी and I will put it inside the main over here after mu put करूँ so there is not much of a difference एटा खाली हमें semantically arrange करूँ ए पेज को over here है ना सब कला पर मुझे देखेबी तुमको कौन कहीं कौन है सो बेसिकली यही पोर्शन को मु सेपरेट रखा चाहूँगी एज हेडर यही देन मु कौन कली कोठू देली ओके मेन इज फ्रॉम दिस प्लेस ओके भुवनेश्वर से सो ए भुवनेश्वर रु हम मेन स्टार्ट एटा हम टिके कमेंट आउट कर दबा लेट अस कमेंट दिस आउट let us see control C comment के so इटा हमरो ऊपर रहिला ए सेक्शन तापर इटा मेन कंटेंट है सो मैं देखि परछो एठी पूरा ब्लू कलर टा इज द मेन सो एठी मु एठी मेन धर लेबे इट इज द एंटायर ब्लू कलर द एंटायर बॉडी ऑफ the page goes into this main section over here ठीक है so next हमें देखिबा is header and footer so जो भी वेबसाइट हमें so this is the हमें just लिखि दबा so this is the content okay content कोटा major content जोटा था सेटा हमें main रे रखियो तापर हम पाखे अछि गोटे एटी header footer हैला जो भी वेबसाइट आम देखू आज जाए जो भी वेबसाइट देखू सपोज ये वेबसाइट आम देखु यही पोर्शन टा हेडिंग अच्छी आ तले मेन रहा आ पूरा तल को आम गले यहाँ गोटे था यहाँ आम फुटर था हेडर एंड फुटर जो भी वेबसाइट रे आमर ऊपर हेडर था तले फुटर था सो दैट्स द अरेंजमेंट इन मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स ओवर हियर तो आमे कौन करबा आमे देखिबा आरो हेडर अर्थ कोन हेडर को काहे की यूज करा जाय फुटर को काहे की यूज करा जाय सो मेनली हेडर भीतर तमरो जेमती बैनर रहइबो हैला हेडर भीतर कोन था सो HTML एलिमेंट रिप्रेजेंट्स इंट्रोडक्टरी कंटेंट ओके एंड आ भीतर जनरली कोन था लोगो था सर्च फॉर्म था ऑथर नेम एई भलिया जिंस था ओके so for example mo web page ko tike jiba so in my web page there should be a header and there should be a footer okay so by that time seta load hochi am footer ta bi dekhi pariba gote amar achi header a gote hochi footer over here hala footer ta kono represents footer can be about the tole thae seta copyright symbol ki ja bi thae seta footer ta tame तले पुट कर परिबो ओके पेज टिके टाइम नोची लोड हो सो एनीवे हेडर ता ऊपर था जोटा इंट्रोडक्टरी मटेरियल जोटा तमरो लोगो सर्च फॉर्म सेटा सब दिए वेयर एज द अदर वन जोटा हमर फुटर सेटा तले पाए तमरो कॉपीराइट सिंबल हो कि सेटा सब हमको मिले सेते तो हमें बे कोन कर परिबा हेडर रे सपोज एठी तुम देखु छ गोटे तमरो एंटी बैकग्राउंड अच्छे आ एटा क्यूट पपीज एक्सप्रेस बोले लिखा है सो हमें हम पेज रे एटा करि परिबा सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस सेक्शन हमें ताको दे दबा एज हेडर या को हमें दबा एज हेडर विकिपीडिया पेज रे हाउएवर हमें देखिले सेटा टिके अलगा था बट एनीवेज वी विल जस्ट मैनेज ओवर हियर हेडर ओके आ तळे हमर एटा कॉपीराइट सिंबल अछि कॉपीराइट सिंबल को सेक्शन न करके हम दे देबा फुटर 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 ठीक अछि सेव करके somehow this is not good okay let refresh kariba so this portion now becomes the header okay now eta amara footer this is the footer over here copyright symbol now एठी हमें चाहिए गोटे बैनर भी दे परिबा बैनर ऊपर ए टेक्स्ट आसीबो
So सेटा परे हमें करि परियो सेटा देखिबा हमें परे. So that's how the things work over here. हैला जो भी वेबसाइट तुम देखो एवरीथिंग विल हैव अ हेडर एंड सपोज हमें किस रो वेबसाइट को देखिबा हैला kiss.ac.in जो भी वेबसाइट देखो सो kiss.ac.in रे तुम देखि परछो इज ए टॉप पोर्शन एटा तुमरो कहि परिबो इज द हेडर हैला जोतरे तुमरो लोगो रहिला अबाउट न्यूज समथि कि एटा रहिला हैला एटा तुमरो हेडर आ तळे तुम देखिबो पूरा तळ गले एटा तुमरो footer portion of it. So this is the footer portion over there. How who we are, what do we do? Okay, so copyright symbol भी हमारा ठीक रहेगा. So this is the header and this is the footer over here. So this is how it is basically arranged over here. ठीक है जी. Now finally ମୁଁ ଗୋଟେ portion ମୁଁ କଥା ହେବି is about aside. ହେଲା aside over here. Okay, let us do one thing. मैं टिके भुवनेश्वर विकिपीडिया पेज भी खोलू. भुवनेश्वर विकिपीडिया. Okay, all right. So आमे टिके उधर देखिबा which portions I want to just designate. हैला so A portion को हमें कहि परिबा is the header. हैला so search box एठी अछि बहुत गुडा tabs एठी अछि भुवनेश्वर भी लिखा है एठी. एटा आर्टिकल सेक्शन को सो एई पार्ट तुम देखो एथरे गोटे छोटो भुवनेश्वर लिखा है छी आउ केतरा इमेजेस एठी लिखा है छी आउ गोटे एठी छोटो मैप देई छी ओडिसा रा आउ एथरे केतरा कंटेंट एठी देई छी सो एई पोर्शन को एई जिंस को हमें कहि परबो इज असाइड aside अर्थ व्हाट डू यू मीन बाय एन aside okay so usually aside अर्थ कला that this represents a portion of the document whose content is indirectly related to the main content. In this sense मु चाहिले मु ए टोटल तो देखि परिबी हला I can refer to this content but मु ए कंटेंट जो अछि एटा मते डायरेक्टली रेफर करबा दरकार नै एटा रिलेटेड आ संगे but this is in a different location out here. So चाहिले मु एठी एठी गोटे aside टा भी देई परिबी. Let's put aside हला so initially हमें just एटा नै जिबा just copy कर दबा एटा okay just एटा नै जिबा एठी paste कर दबा side okay okay एठी गवर्नमेंट एटा बुलेट पॉइंट्स देई छी तो हमें एठी कोन ओटे देई परिबा यूएल दे दबा एठी हला यूएल okay just एटा नै जिबा यूएल li okay and we have municipal corporation li hela this is type is municipal corporation okay it body is BMC okay so right okay here is li ठीक है चलो एटा एति की रखिबा एटा हम डिलीट कर दिया so the idea is a portion ta is not directly related to the content है ना जो content हम जहाँ create कर जो सेथरे directly related न हो है ना और just एटा footer तले देखा जाउ छै एटा but परे हमें कोन करबा इस आकु हमें ए साइड को नै जेबा जेबे के css हमें सिखिबा css सिखला परे हमें साइड को एठी नहीं पारिबो तो बट दी पर्पस एठी देखो एठी गोटे हम एग्जांपल देखिबा एठी केतरे गोटे पैराग्राफ अछि salamanders आ एठी पैराग्राफ्स अछि
So basically now देखो ये paragraph टा इटा continue है लाइट है ना, but ये portion टा is an aside. और वाला website रे तुम्हें समथिंग तुमको मिले is you find a aside portion of it that you can put on the side over है ना. So header उधरे हमारा जाए, header जाए on the top, footer जाए on the bottom. Now aside is apart from the main content, apart from the main content over here. So I don't know how to cover परिपरिबी, but I hoping that तुम माने ये जो सातटा मुझे लिखे ची सही सातटा तुम्हें पढ़िबो मतलब just click and तुमको MDN पेज को तुमको नहीं जीवो सेटा ଆଉ ତମେ ସେଟା ପଢି ପାରିବ ହେଲା. ତ ଦେଖିବ କି actually କଣ ତାର purpose କାହିଁକି ସେଟା use हुए in this particular case over here. So apart from this over here ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅଛି is table HTML table ବିଷୟରେ. Now HTML table ର କାମ କଣ ହେଲା, HTML table ର କାମ କଣ, what are tables? So tables are structured एठी मु लिखी छि sets of data हैला made of row and column हैला. गोटे table रे हमरो row थाए आउ different columns थाए. So हमरो जो table थाए, table is mainly to display data हैला. गोटे जो data थिबो स्टाकू हमें देखेबा से हैला. So this is a great way of displaying data clearly. सब जिनस तुम तो पैराग्राफ रे लिखिबनी तुम ताको गोटे टेबल रे टेबल फॉर्म रे देबो ओवर एठी आ गोटे मु एठी गोटे पोर्शन लिखि छि अर्ली यूसेज. सो बिगिनिंग रे एचटीएमएल जब आरंभ होला तो एटा एमिति यूज होतला हैला. टेबल्स वर कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट पेज लेआउट्स. सो आगर कोन करा होतला एमति गोटे बड़ टेबल बना हबो हां तार गोटे एई प्रथम रो रे लोगो दिया जीवा हैला. एठी गोटे आ गोटे एठी साइड रे सर्च बॉक्स थिबो, एथरे गोटे बैनर थिबो हैला. एठी कंटेंट रहला तापर आ गोटे क्लोज एथरे एथरे कोन गोटे फोटो टाइप. सो द एंटायर वेब पेज यूज्ड टू बी वन टेबल हैला. एंटायर वेब पेज यूज्ड टू बी वन टेबल ऑफ इट. सो मु आ पई केतरा तुमको तुमको देखे गोटे एग्जांपल तुम देखि परथबो इज विकिपीडिया रा हम गोटे टेबल एग्जांपल देखिबा. सो एटा गोटे टेबल देखो, इट्स बढ़िया टेबल गोटे अछि तुम देखि परछ. दिस इज लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड हैला. तमरो व्हिच आर द लार्जेस्ट सिटी विद इन द वर्ल्ड एटा तार गोटे बढ़िया टेबल दिया है where you can see the city country एटा हमर एंटी दिया है. आई थिंक एथरे हमको एटा मिलिबन. ओ एठे हमर गोटे टेबल अछि, एटा भी देखो इट्स अ वेरी गुड टेबल जोठे हम क्लाइमेट डेटा देइ छै हैला. सो सेंटीग्रेड जनवरी फरवरी मार्च. So basically this is what a table should be हैला. So this is what the table should be. जो गोटे डेटा को रिप्रेजेंट करबा पई we are using the table of it. बट किसी हम केतरा पुराना वेबसाइट देखिबा जोटा खाली टेबल रे बना है हैला. एटा गोटे पुराना वेबसाइट 1996 रो एटा वेबसाइट देखुछ, बहुत पुराना. एई बळे आजकल तुमको वेबसाइट मिलिबो ही नहीं एठी देखि परबा हम. सो एटा देखो, दिस इज बेसिकली सेंटर ओके एंड एटा टेबल अछि. एटा देखि परछ एटा टेबल अछि. एटा this is a table. So this is an example of how tables were used for creating the site layout. And this is not very helpful. Logically ये बड़े तुमको मिले ना. हमें जो layout बनाओ जो layout पाए हमें जहाँ पे नुआ tag ऐठे देखले. So we have learned about section, article, nav, name, header, footer. We use this, okay, we use this for creating layouts. Okay, so we use this for layouts. We don't use tables for layouts. So initially layouts find এটা use होती है. तो मैंने कोई shopping website भी देखे थे. So ସେଥିରେ भी you can use tables to display the various. এটা ଗୋଟେ website for
Godda website. So you can see here. So these are all got a table अच्छे से थोड़े different rows अच्छे rows और तुमको जो भी website का मैं देखो you can even go to Amazon है ना Amazon the shopping website हम देखिए पाए तो is they have different tables. Okay, so they have different tables to display the different data in this particular case over here. So this is how you ଏଇଭଳି ଆମେ table ବନେଇ ପାରିବୁ ଠିକ ଅଛି so ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ example ନେବା ଟିକେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର example को let us give it a rest ହେଲା okay, let's close all this. Let's close all this. Okay, भुवनेश्वर এটা सब बंद करिवा आमे एई वेब पेज को रिक्रिएट करिवा हला एटा गोटे एटी टेबल दिया है हमको सो से टेबल को हम क्रिएट करिवा all right so this is the table that we are given so a table hame बनेबा how we will try to create data hame recreate करके हमें देखिबा so this is the heaviest living bird species जो पक्षी माने सब heavy है so we'll try to create this table so maybe I'll take the first 5 कीमती कितना ने भी तापर हमें एटा क्रिएट करिबा हला so to create table we have different tags we have table td tr ththead tbody tfoot call group and caption so we have a lot of different tables so mu roughly take कहि दिए I think हम पाके बेसी टाइम नहीं तो मु roughly take पूछे देबी कौन कौन हमरो tags अछि so suppose this is our table so हमरो different rows रही छी okay and then we have different columns we have different columns over so table रो tt tr होची रो ହେଲା tr होची रो को बुझा जाए tt होची गोटे सेल एटा गोटे सेल एटा गोटे सेल एटा गोटे सेल tr td यूज करके हम सेल बनो ହେଲା th होची हेडर टेबल रो हेडर ହେଲା टेबल रो हेडर टेबल रो बॉडी को t बॉडी को हो जाए and t foot हे पारे हमरा टेबल footer ओके तापर कॉल ग्रुप हे पारे हमर कॉलम को गोटे हम ग्रुप करबा किछि कॉलम ग्रुप करबा हला आ कैप्शन दे परबा टेबल रो कैप्शन हमको मिली था ओके सो दिस इज रफली हमरो डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द टेबल हला सो हमें ताको इंडिविजुअली देखिबा and we will create this a table over here ठीक है so I'll just stop here and upload करूची हला so make sure all of you go through this जहाँ भी मैं upload करूची एथरे देखि पारथबो HTML tags हला एटा क्लिक करले तुमको स्लाइड टा मिलबो and this is the individual videos over here ठीक है so make sure तुम एटा देखो हला केमती ए पोर्शन टा जोटा हम आज कवर करिछि especially a part हला instead of using the div tags we should be using a section article nav main header footer और aside हला div tags न यूज करके हमें एटा यूज करबा ठीक है all right so I'll stop here table बनेला पर we will talk about different forms okay and हमर HTML सरला पर we will go for CSS over here so if कहारो किछ क्वेश्चन अछि मते पछारि पारि